CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 9, Exercise Miscellaneous, Question number 26. So that 1 into 2 square plus 2 into 3 square plus dash dash plus n into n plus 1 whole square upon 1 square into 2 plus 2 square plus into 3 plus dash dash plus n square into n plus 1 is equal to 3n plus 5 upon 3n plus 1। अब देखिए nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं पहले। देयर इज n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। सो n क्यूब मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया इसको और मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में। देखिए n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। अब nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर लिख लीजिए। n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब इसका समेशन लेना है तो Sn विल बी इक्वल टू, इन द न्यूमरेटर पार्ट में देखिए सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 2 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू k। ये क्या है किसका, न्यूमरेटर पार्ट का। नाउ कम टू द डिनोमिनेटर पार्ट। सिग्मा k is equal to 1 to n, that is k cube plus sigma k equal to 1 to n k square। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ n। k क्यूब के लिए क्या है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2 होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर लिखेंगे, क्या है k क्यूब है तो k क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए k स्क्वायर है तो k स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे हम, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब हम इसको स्क्वायर को खोल देते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर बना देते हैं। देखिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब डिनोमिनेटर में देखिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। देखिए पहले ध्यान दीजिए, 2 कॉमन फैक्टर हो रहा है। आप ये कहें कि हमने डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर पार्ट से देख लीजिए हम 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, या यू कैन राइट बाय मल्टीप्लाइंग इन द न्यूमरेटर बाई 2 एंड डिनोमिनेटर। सो क्या होगा, यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर पार्ट आल्सो इट विल बिकम 2 एंड इट विल बिकम 3। अब देखते हैं इसके न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए यहाँ से n कॉमन निकल रहा है, यहाँ से n कॉमन निकल रहा है, यहाँ से n कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर पार्ट में। इधर भी देखिए n कॉमन है, यहाँ पर से n कॉमन है, 2 टर्म है यहाँ पर, दोनों से मैंने n कैंसिल किया। इस n स्क्वायर का केवल मैंने स्क्वायर कैंसिल किया 2। यहाँ पर भी देखिए केवल n का स्क्वायर हटाया है, यहाँ से n का आउट किया, यहाँ से n का आउट किया। अब देखिए n प्लस 1 इधर भी है, n प्लस 1 इधर भी है, n प्लस 1 इधर भी है। तो n प्लस 1 तो इधर कैंसिल किया, लेकिन
n+1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल किया हूँ मैं, पूरा नहीं कैंसिल किया हूँ। तो यहाँ पर तो n+1 पूरा कैंसिल हुआ है, यहाँ पर n+1 कैंसिल हुआ है, यहाँ पर n+1 का स्क्वायर कैंसिल हुआ है, नीचे भी डिनोमिनेटर पार्ट में भी केवल n+1 का स्क्वायर कैंसिल हुआ है। सो वी आर लेफ्ट विथ नाउ n इंटू n+1/2 प्लस 2/3 इंटू 2n प्लस 1, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 लिख दिया। नाउ कम टू द डिनोमिनेटर पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू n+1/2 इंटू 2n+1/3। देखिए 2n+1/3, इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने। देखिए इनका क्या एलसीएम होगा, 2 and 3 का 6 होगा। अब 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से आ जाएगा, 3n इन ब्रैकेट n+1, यहाँ पर हो जाएगा 2 पहले से ही है तो 4 इंटू 2n+1, और यहाँ पर जो 1 था दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6। मीन्स मैंने हर एक इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझिए। सो वी गेट अल्टीमेटली दिस रिजल्ट, दैट इज 3n इन ब्रैकेट n+1 प्लस 4 इंटू 2n+1 प्लस 6 होल अपॉन 3n। देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 3 जा 6, तो 3n n+1 प्लस 2 in bracket 2n+1 bracket closed. Now come to, it will be further solved. You see 3n square plus 3n plus 8n plus 4 plus 6, that will be divided by 3n square plus 3n plus 4n plus 2. Now you see the 3n square plus 11n plus 10, इसको समराइज कर दिया मैंने और कंसाइज कर दिया मैंने, छोटा कर दिया। 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, डिनोमिनेटर में देखिए 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। अब मैं इसको लिखा है कैसे, देखिए स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, 11 को, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। क्यों किया है ऐसा, देखिए 10 3 जा 30। In order to get the product 30, what I have done, I have splitted the 11n in the form that is 6n plus 5n. Similarly here, you see 2 3 ja 6. So this 7n has been splitted into form that is 6n plus n. Now we can take common from the first two terms. You see 3n outside of the bracket and inside you will get n plus 2. And from the third and fourth term you will get 5 common. So here in the denominator also you see the 3n is common from the first two factor, from first two term, that will be 3 in bracket n plus 2. Here again you will get n plus 2. So n plus 2, you see in the upper part it is also common, and in the denominator also n plus 2. So I have cut it, n plus 2, n plus 2, n plus 2. So we are left with 3n plus 5 upon 3n plus 1. Hence it is your right hand side, it is also proved. Now a farmer buys, question number 27, a farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? देखिए अनपेड पर उसको 12% का इंटरेस्ट भी देना है और साथ ही साथ 500 का इंस्टॉलमेंट भी जमा करना है। नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इज 12,000. इनिशियल कैश पेड इज रुपीज 6,000. सो अनपेड अमाउंट विल बी इक्वल टू 12,000 माइनस 6,000, दैट विल बी इक्वल टू 6,000. इंटरेस्ट पेड एज फॉलोज. देखिए पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम में वो जो इंटरेस्ट पेड करेगा 12% ऑफ 6,000. सब्सिक्वेंटली
12% of 550. 5,500. 12% of 5,000. 12% of 4,500. 12% of 4,000. Similarly, up to the last, that is the 12% of 500. This will be the last. I have written here completely. So now the 12%, that can be summarized in this way. 12% of 6,000, 5,500, 5,000, 4,500, 4,000 plus 3,500 plus 3,000 plus 2,500 plus 2,000 plus 1,500 plus 1,000 plus 500. So this forms, just to take the reverse order, if you start from 500 to 500, 1,000 to 1,500 in this way, then you will get the initial term will be your 500. Means first term will be 500, I have taken here. 500 is the common difference, and n minus 1. So it should be equal to 6,000. Summation of this means 6,000 is the total. So here 500 plus 500 in n minus 1. This 500 is difference. 6,000, that is the total term you see here. So 5,000 I have taken, 500 I have taken common. So 1 plus n minus 1 will be multiplied to n. Now the 500 multiplied by n. Now the n will be equal to 6,000 divided by 500, that will be equal to 12. Means 12 installment will be there. Now come to this part. The 12% of, in bracket 12 by 2, means number of terms is 12. So 12 divided by 2 into 500 plus 6,000, that is the last term. Here n, a is the first term here, I have taken the 500, a, and the last term I have taken 6,000. So the formula used is n by 2 into a plus l. Now 12 by 100, 12% into 6, 12 divided by 2, that is 6. और इसका सम लिया तो 6,500. इसको सॉल्व किया, you will get 72 into 65, that will be equal to 4,680. ये इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट पेड. He paid the 12 installment of rupees 500, which amounts to 12 into 500, that will be equal to 6,000. Now the initial payment of rupees 6,000. So the tractor cost him 12,000 plus 4,680. So the total amount he has paid after paying the cash of 6,000, he has already paid. In addition to that, he has paid 16,680. You see, the 6,000 he has already, initial payment is 6,000, and he paid 12 installment of rupees 500, which amounts to 12 into 500, that is 6,000 here. ये 6,000 हो गया, और 6,000 उसने इनिशियल पेमेंट किया, तो टोटल तो हो गया आपका 12,000, और उसने इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर दिया, 4,680. So the tractor cost him, that is 12,000 plus 4,680, which is equal to 16,680. And this is the answer of question number 27.